10 months ago when Satyendra Jain was first arrested. All of that over the course of 25 minutes. I have Rajdeep Sardesai who's going to break it down for us as well. And our Aam Aadmi Party reporter Sanjay Singh would also be joining us shortly. But taking you through, two top Delhi ministers resign. The jailed Aam Aadmi Party leader Manish Sisodia and Satyendra Jain both tendered in their resignation. Manish Sisodia sent his resignation in a 3-page letter, highly emotional, where he invoked from his father, his mother, to allegiance to Arvind Kejriwal, Lord Krishna, and ultimately sacrificing his post at the altar of what is best for the citizen of the national capital. Trust Aam Aadmi Party to take and build that narrative further. Meanwhile, the Delhi Chief Minister has accepted their resignation. This comes clearly after there was no relief given to Manish Sisodia in the Supreme Court. The top court said that the Delhi Deputy CM needed to go to the High Court if he wants to challenge his arrest by the CBI in the Delhi liquor policy case. But viewers, one thing is very clear, that resignations of both the ministers might have happened and Arvind Kejriwal might have accepted it. However, it's going to be a long drawn process because the resignation will first have to be sent to the LG. The LG will approve, then the resignation goes to the President of India. This whole process takes about a month and a half. So who steps in to the shoes of both the leaders? Earlier on, indications suggested that the likes of Atishi and Saurabh were going to be elevated. Not quite. The party has decided, with rumbles within the party of this elevation, that they can only firefight outside the attack of the BJP, attack of what they call vendetta by the agencies. Let's listen in to Saurabh Bhardwaj. आदरणीय और सीनियर मिनिस्टर्स, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण आज जेल के अंदर हैं। उन्होंने अपने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो दो मंत्री जो अपने काम के लिए जाने जाते थे और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। ये के झूठे हैं, फर्जी हैं। हमारे दोनों मंत्री पूरी ईमानदारी से अपना पूरा जीवन जो है समर्पण कर रहे हैं इस समाज के लिए, दिल्ली के लिए, अपने देश के लिए। और आज उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को मिला है। उन दोनों ने अपना अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को दिया है क्योंकि दिल्ली में छोटी कैबिनेट है। मुख्यमंत्री जी और उनके साथ 6 मंत्री मंत्री परिषद में होते हैं और सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी के पास सब लोग जानते हैं, ज्यादातर जो अहम मंत्रालय थे, पोर्टफोलियोज थे, डिपार्टमेंट्स थे, वो इन दो हमारे सीनियर मिनिस्टर्स के पास थे। तो इनकी एब्सेंस में दिल्ली वालों का काम जो है वो प्रभावित ना हो, दिल्ली का काम ना रुके, दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे, मगर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी
और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर पार्षद, एक एक कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब के साथ उनके पीछे खड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ, आपने कहा 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे या फिर जो बाकी मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा 2 लोग नए मंत्री बनाए जाएंगे, मतलब 2 नए चेहरे होंगे कैबिनेट में? जी। अच्छा, क्योंकि अभी तक ये जानकारी आ रही थी कि जो राजकुमार आनंद है कब तक होगा, मतलब नया अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होंगे या होगा? तो ये कब तक आप मान के चल रहे हैं कि 2 नए चेहरे मिलेगा? आप ही कह रहे हैं इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है हमारे पास, ये जानकारी है। अच्छा, सर, क्या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को लेकर भी कुछ है कि उनके लिए भी कोई चेहरा डिस्कशन है? देखिए, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। सौरभ, साथ ही सवाल ये है कि सत्येंद्र जैन तो अभी तक मंत्रियों की लिस्ट में थे, हालांकि उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, वेबसाइट में भी जाएंगे उनका नाम था वहां पर, तो अब ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा अचानक से आपने ले लिया? ये सवाल उठ रहा है कि वजह क्या रही? देखिए, ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है। सत्येंद्र जैन साहब जब नहीं थे हमारे बीच में, तो उनके जो मंत्रालय थे वो मनीष सिसोदिया जी को दिए गए थे, और मनीष सिसोदिया जी के पास लगभग सभी बड़े बड़े मंत्रालय थे, और वो बड़ी मेहनत से उन सभी मंत्रालयों के साथ जो है कोशिश करते थे कि काम हो। करीब 18 मंत्रालय उनके पास थे, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंडस्ट्रीज हो, वाटर हो, लेबर हो, एक्साइज हो, होम हो, यूडी हो, सभी तरीके के मंत्रालय थे। अब क्योंकि मनीष जी को भी झूठे षड्यंत्रों में जेल में भेजा गया है, अब प्रैक्टिकली दिल्ली के काम ना रुके, इसको सोचते हुए उन दोनों ने अपना इस्तीफा टेंडर किया है। All right, viewers, you're going to have press conferences after press conferences, but what's the biggest takeaway out of it? Manish Sisodia and Mr. Jain, Satyendra Jain, have tendered in their resignation. There will be 2 new ministers, but not now. At least for a month to 2 months, or even a little more than that, there will be no new inductions. Their portfolios will be redistributed amongst Kailash Gehlot and Rajkumar Anand. Rajkumar Anand has been with Arvind Kejriwal even before 2012, right through the India Against Corruption movement. So he actually got what Mr. Gautam's portfolio was when he stepped down, which is social welfare and justice. I want to bring in Rajdeep Sardesai, consulting editor, for more on that, and we'll cut across to Sanjay Singh in just about 2 minutes from now. Rajdeep, how do you view these developments? The party right now going ahead accepting the resignations of both these leaders. What does it mean politically? Because it seems they're going to build that narrative to the public that we're not going to let a personal witch hunt come in the way of delivering what we promised to you is the Delhi model of governance. But the fact is, Preeti, Satyendra Jain has been in jail for more than 6 months. And his resignation was not sought. I think what has happened is with Manish Sisodia, who really is the right-hand man, number 2, the administrative face of the Delhi government, also being arrested, and possibly no option. He simply had no option once Manish Sisodia was arrested, that he will have to, in a way, effect some changes in government. It cannot be business as usual. It cannot be status quo. That's exactly what's happened. For much too long, Arvind Kejriwal perhaps was hoping against hope that this liquor policy case will, the alleged scam will simply be brushed aside and he and his party can focus on expansion. Only in the next few weeks, he was supposed to travel across the country from Chhattisgarh to Karnataka, in a way trying to build bridgeheads for AAP out across the country. That's possibly now going to have to be deferred till such time as he ensures that this immediate crisis, which, as we discussed yesterday, is the worst crisis AAP has faced since its inception. Unless he can resolve that, Preeti, how does he now even hope to expand? And therefore, taking the resignations of the ministers is a first step towards acknowledging the nature of the crisis and then trying to find some solution. So I think in a way, Arvind Kejriwal was left with no choice once the Supreme Court today turned down Manish Sisodia's bail plea.
Well, and he also wants to continue, with his plan of going to all the election-bound states. So therefore, he wanted to settle the matter at the earliest, because that stays as planned. In the next 10 days, Arvind Kejriwal will be going to all the election-bound states. But joining me right now is Sanjay Singh, MP Rajya Sabha, Aam Aadmi Party. He's joining us. संजय जी, ऐसा क्या हो गया कि दोनों मंत्रियों ने इकट्ठा रिजाइन किया, रेजिग्नेशन दिया? कौन कितना भार अब लगता है कैलाश गहलोत जी संभालेंगे, राजकुमार आनंद जी संभालेंगे, पर क्या हुआ कि इन दोनों के इस्तीफे मांगे गए? देखिए, ऐसा है कि ये एक संकट का समय जरूर है, मुश्किल का समय है, और लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का भरोसा पाकर 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे अनुकरणीय काम किया है, और उन्होंने मुनाफे का बजट दिया है दिल्ली के अंदर। तो वो जैसे पहले काम करते रहे हैं वैसे आगे भी करेंगे। ऐसी बाधाएं पहले भी हमारे सामने आई हैं, हमने उसका सामना किया, आगे भी करेंगे। संजय जी, एक चीज बताइए, जो इस्तीफे हुए हैं इसमें अब सौरभ जी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, वो कह रहे हैं कि 2 नए चेहरे आएंगे। क्या ये सौरभ और आतिशी होंगे? और जब तक ये नहीं आएंगे, कम से कम इनमें 1 या 2 महीने लगेंगे, सौरभ जी ये भी कह रहे हैं, कोई टाइमलाइन नहीं है। क्या तब तक ये जो पोर्टफोलियोज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? अब ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इसके बारे में वही फैसला लेंगे, उस पर मेरा कोई कमेंट करना ठीक नहीं। चलिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री जी तो कोई पोर्टफोलियो नहीं रख रहे हैं, हमें यही सुनने में आया है, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं रॉन्ग हूं। पर इसमें भाजपा कह रही है कि बहुत देर आए, 1 साल पहले, 10 महीने पहले इस्तीफा हो जाना चाहिए था। जब सीबीआई की रेड हुई मनीष सिसोदिया पे, तब इस्तीफा होना चाहिए था। नहीं, बहुत सारे राजनीतिक दल आप देखिए, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई माले, आरजेडी, जेडीयू, केसीआर जी की पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी, हेमंत सोरेन जी की पार्टी, टीएमसी, सारे राजनीतिक दलों ने इस कार्रवाई की, शिवसेना, संजय रावत जी का बयान आया, सारे राजनीतिक दलों ने इस कार्रवाई को तानाशाहीपूर्ण बताया है और गलत बताया है। कांग्रेस ने अलग अलग राय, कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लेकिन कल मैंने देखा कि जयराम रमेश जी का भी एक बयान आया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे राजनीतिक दल देश भर में हैं, उन्होंने सब ने, विपक्ष के सारे दलों ने इस घटना की आलोचना की है। संजय जी, आपको क्या विवश हो गए कि आपको ये रेजिग्नेशन करवाने पड़े? क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी जो भी आपकी याचिका थी उसको बोला है कि यहाँ पर मत आइएगा, हाई कोर्ट जाइएगा। तो अब क्या सिर्फ आपका धरना प्रदर्शन वही जारी रहेगा? देखिए, प्रोटेस्ट तो होगा ही, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में सड़क पर भी अपनी बात पहुंचानी है, सदन में भी अपनी बात पहुंचानी है और न्यायालय की भी लड़ाई। 3 मोर्चे हैं जहां पर हमको अपनी लड़ाई को लेके जाना है। अब एक ऐसी सरकार इस देश के अंदर बैठी हुई है जो फर्जी मामले लगाकर विपक्ष के लोगों को परेशान करती है, उनको जेल में डालती है, और जो बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मनीष सिसोदिया का गुनाह क्या है? दिल्ली के 18 लाख बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। एक बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिल्ली में उन्होंने दिया, जिससे पूरे देश और दुनिया में उनका नाम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का नाम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता देश के दूसरे हिस्सों में बढ़ रही। परेशानी यह है, यह मुकदमा पूरी तरीके से राजनीति के। आप बताइए, अगर मनीष सिसोदिया ने कोई घोटाला या घपला किया है, जो बीजेपी वाले कहते हैं 10,000 करोड़ की रिश्वत खा ली। अरे भाई, घर पे 14 घंटे छापेमारी कर ली सीबीआई ने, घर खोद डाला, कुछ नहीं मिला। गांव खोद डाला, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी कर ली, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं। अगर मनीष सिसोदिया ने कोई रिश्वत खाई है, कोई बेईमानी की है, कुछ तो संपत्ति, सोना, पैसा कुछ तो मिलता।
बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया, thank you there. We're going to keep expecting more press conferences. Very quickly, I want to bring in Rajdeep for a quick word before we end the bulletin. Rajdeep, how do you see things go from here on? The other fact, do you think it was inevitable? Because the halo of Kattar Imandar was clearly getting dented, and this move had to be made quicker than later. Oh, absolutely, Preeti. And let's also be clear that you can't defend Manish Sisodia on a corruption case by pointing to his track record on education. At some stage or the other, the Aam Aadmi Party will have to frontally answer the charges that are being made against them beyond just outrage. And I think while they can play the victim card for a while, there's a limit to how long you can play it. And therefore, I think the Aam Aadmi Party is recognizing it, Arvind Kejriwal is recognizing it, that you're almost going to have to take this opportunity to effect some kind of a facelift. Not easy, given the fact that Mr. Sisodia is such a critical player within the AAP's hierarchy. But I think a facelift is almost inevitable. What form that will take, how he will push that narrative. But clearly, as you rightly said, that anti-corruption image, the core of the AAP, has been badly dented by the arrest of Manish Sisodia. All right, appreciate you joining us. Do stay with us. Our continuous coverage on the other side. Rahul Kaval, stay with us. Warli painting, a mural art form of Maharashtra, gives Aurangabad a facelift ahead of a G20 inception meeting. A group of 120 women painted non-stop for 6 hours to complete the artwork. वुमेन एम्पावरमेंट शो करते हुए हम लोग ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वारली का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वारली पेंटिंग जो है, जिसका रिकॉर्ड पहले पूना में था, उसको पूना के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए, उसको चैलेंज करते हुए आज हम सब लड़कियां, वी आर 120 लेडीज हियर वर्किंग फॉर दिस वारली पेंटिंग टुडे. और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो है नंदिनी घोडेले. ये कॉन्सेप्ट जो जहाँ से आई है, वो लड़की ने सर 21 इयर्स की लड़की है. दिस इज रियली अ मोटिवेशन टू ऑल द गर्ल्स ओवर हियर. The work spread over 3200 square feet will enter the India Book of Records 2024 in the social and cultural category. This painting breaks the earlier record of 3050 square feet set by artists in Pune. I congratulate all the dignitaries, those who have taken efforts, जिन्होंने इस इवेंट को एक सक्सेसफुल बनाया है, and congratulations to Aurangabad Municipal Corporation. There were no professional artists among the 120 participants. They came from different professions like medicine, accountancy, and engineering. Bureau Report, India Today. The integration of Air India and Vistara needs to go through a regulatory approval process. There are 3 steps to that process. One is competition clearance. The second is from a DGCA regulatory aviation perspective. And the third is obviously the merger of the 2 companies. We are in the process of the first phase, seeking competition clearance. But in anticipation of this, we are working together with some external parties to work on what are the areas of opportunity in an integrated business, what are the things that we need to focus on in the process of that integration, and what would the end state look like once we have received clearance to actually embark on the integration process. The intention is to end up with 1 full-service airline and 1 low-cost airline in the group. The full-service airline will be an amalgam of Air India and Vistara. But we expect that many of the practices and systems will be those of Vistara. Being a younger
privatized airline that has been able to imbibe the learnings that it brings from its other shareholders. We are not unaware of what they have in terms of systems and processes, and so over the course of the privatization process and the last year, a lot of the transformation that we've been doing at Air India has been with a view to put ourselves on a similar platform as Vistara, so that in the event the merger is approved, it's a much more seamless and faster process. I think there is certainly there's a desire to carry forward the heritage of both erstwhile Air India and Vistara into the new Air India. Quite the form in which that Vistara component takes, we're still working through. Vistara clearly has achieved a lot of success and very strong recognition and respect in the Indian market. But if you look outside the Indian market, clearly Air India is much more recognized and has a 90-year history. So we've communicated to staff that the future full-service carrier will be called Air India, but we would like to retain and celebrate some of the Vistara heritage in that new manifestation. When you want to, pick up the pace if you like, slow down if you wish to. Well, as you can see, I'm doing a very simple form of exercise. It is walking, and there are many hidden benefits of walking. I'm here to tell you about all the hidden benefits of walking today. Does the sight of this overwhelm you? Are you always running out of time and can't make time to go to a gym? Do you feel worried about not getting any physical activity? Then don't, because walking even for a few minutes a day can go a long way in doing wonders for your health. It affects our heart, it affects our liver, it affects our blood pressure, it affects our muscles, it affects our bone. It affects our brain, it affects our coordination, it affects our psyche. Walking releases endorphins, which are mood elevators. So really speaking, if you are walking every day, you are really living, otherwise you're not living at all. The benefits of walking are many, and it goes beyond getting in some physical activity in. To start with, this is a great way to boost your mental health. If you're looking to benefit from how you can cope effectively with the situations, the stresses that you have in your life, integrating an activity like walking can be also extremely helpful. Just 30 minutes every single day can increase cardiovascular fitness, strengthen bones, reduce excess body fat, and boost muscle power and endurance. It can also reduce your risk of developing conditions such as heart disease, type 2 diabetes, osteoporosis, and some cancers. Don't have 30 minutes to walk? Even 10 will do. In fact, even when you're at home, a lot of times you'll find yourself sitting on a couch or lying down in your bed, not really moving about. And in fact, if you can integrate even an activity like walking for just about 10 minutes in your day, it can have immense benefits for your mental well-being. Walking also helps in improving sleep, in dealing with insomnia. Studies show it reduces the risk of coronary heart disease as well.
Tragedies can either break you or make you. And this story from Naxal hit Gadchiroli will inspire you in many ways. Bharati Bogami was just 17 when her father, the Sarpanch of Lahiri village, was shot dead by Naxals in 2002. A brain tumor survivor, she faced several financial problems and yet continued her struggle to become a doctor. She now serves in the same area where her father was killed. मैं सोच रही थी अब तो पापा चले गए, आज ये सब होने के बाद अगर यही मेरा फ्यूचर, अगर मैं पेपर ना दूं तो आगे कैसे बढ़ूं। मेरे पापा की एक ख्वाहिश थी कि मुझे बचपन से मुझे बोलते थे, नर्स बोलते थे, डॉक्टर बोलते थे, ऐसे मुझे अच्छा लगता था। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने सोच लिया या तो सब सिटी में रहकर सब लोगों को तो डॉक्टर है, लेकिन मेरे गाँव को मेरे लोगों की बहुत ज़रूरत है। मेरे दिल में ऐसे कुछ तो भी चुभन जैसी लग रही थी कि अपने गाँव जाके मैं सेवा दूँ, इसीलिए फिर मैं रिटर्न आ गई। Bogami found a life and work partner in Satish, who moved from Beed to the tribal area only to support her dream of serving her village. मेरी जो बीवी है उसने मुझे मोटिवेट किया कि उन्होंने मुझे ये बताया कि डॉक्टर प्रकाश आमटे, डॉक्टर मंदाकिनी आमटे, डॉक्टर दिगांत आमटे और डॉक्टर अंदाकिनी आमटे वो जो कार्य वहाँ करते, उनसे कुछ मैं इंस्पायर होके मुझे भी ऐसा कुछ लगा दिल को कि अपन जाके आरोग्य में थोड़ी तो सेवा देना। मेरे अंतर्गत जो 52 गाँव है वहाँ जाना इम्पॉसिबल है। कई बाइक पे जाना पड़ता, कई जगह 10-10 किलोमीटर चलते हुए जाना पड़ता, वो आरोग्य सेवा देना पड़ता है। Bharati and her husband have made it an aim to serve people in her village where health facilities are not easily available. Bureau Report, India Today. Presented by RP Sanjeev Goenka Group, Growing Legacies. Co-presented by Century Ply, आग से बचाए. Co-presented by Macho Hind, बड़े आराम से. Co-powered by Seat, it helps. Co-powered by Sera, this is your space, play it your way. Hyundai Ioniq 5, the all-electric SUV. Good evening and welcome. You're watching the news track. I'm Rahul Kamal. How will the Aam Aadmi Party function now